बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लाइंग टॉर्टोइजेस। फ्लाइंग टॉर्टोइजेस जो है ये टेस्ट 7 है और बुक 12 का ये टेस्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा टाइटल को पढ़ते हैं। टाइटल के बाद क्या करते हैं, हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फॉरेस्ट सब स्पाइनी कैक्टी कवर मच ऑफ द अनइवन लावा प्लेन्स दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द गैलापागोस आइलैंड ऑफ आइज़ाबेला फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। इसको हम लोग विद इट्स 5 डिस्टिंक्ट वोल्केनोज द आइलैंड रिजेंबल्स a lunar landscape. Only the thick vegetation of the skate of the often cloud-covered peak of Sierra Negra. Galapagos birth around 5 million years. The islands were colonized by one or two tortoises from mainland. As these ancestral tortoises settled on the individual island, the different populations adapted to their unique environments, giving rise to at least 14 different species. अब हम लास्ट से पढ़ लेंगे ज़रा। Island life agreed with them in the absence of significant predators. They grew to become the largest and longest living tortoises on the planet, weighing more than 400 kilometers, occasionally exceeding 1.8 meters in length and living for more than a century. इनकी वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें ज़रा। जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप लोग अंडरलाइन करते जाएं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नॉन्स, इनको अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले क्या है, वन वर्ड ओनली। आप इसकी समरी को देख लें ज़रा। द डिक्लाइन ऑफ द गैलापागोस टॉर्टोइजेस। Number of on Galapagos Islands increased due to lack of predators. 17th century small numbers taken onto ships used by dash. 17th century देखेंगे हम किधर है। Small numbers taken onto ships used by dash. Small numbers taken onto ships. Ships के ऊपर क्या लेके आए हैं, used by dash, जो कि इस्तेमाल करते हैं। किसके ज़रिए इस्तेमाल होता है, by मतलब through। इसका सिनोनिम क्या है, through। 17th century 17th सेंचुरी किधर है, ज़रा ये देखें। 1790s है, तो इसके ऊपर होगी 17th सेंचुरी। ये है 17th सेंचुरी। अब हम देखेंगे यहाँ पे यूज्ड बाय, टेकन ऑन टू शिप्स। शिप्स किधर है, पायरेट्स टुक आर फ्यू ऑन बोर्ड्स फॉर फूड। पायरेट्स टुक a few on board for food. हमारा आंसर क्या है, पायरेट्स, यूज्ड बाय पायरेट्स। Alhamdulillah. 1790s very large number taken onto whaling ships kept for dash. 17 very large number onto whaling ships kept for dash। किस चीज़ के लिए उन्होंने रखा था, कीप, kept, kept, ये थर्ड फॉर्म है। This took a few on board for food, but the arrival of whaling ships in the 17th saw this exploitation grow exponentially. तो हमारा आंसर क्या है, फूड, few on board, kept for food। नेक्स्ट पे है ज़रा। एंड आल्सो यूज टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब पैदा करने के लिए, क्या पैदा करने के लिए, आल्सो यूज टू प्रोड्यूस। ग्रो एक्सपोनेंशियली,
But the arrival of whaling ships in the 1790s saw this exploitation grow, rehabilitated immobile, capable of surviving for months without food or water. And on board these ships to act as a food supplies. During long ocean passages, their bodies were proceeding to high. दोबारा देखें ज़रा क्या आंसर दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे. Also used to produce. Sometimes their bodies were processed into high grade oil. आंसर क्या है हमारा? Oil. Hunted by dash on the islands. Hunted by dash on the islands. इनको कौन हंट करता था? Settlers came on the island. आंसर क्या है? Settlers. For the establishment of agriculture and by various dash not native to the island. Agriculture and by various establishment of agriculture and by various agriculture किधर? ये आ गया हमारा agriculture. They hunted the tortoises and destroyed their habitat to clear land for agriculture. Hunted by settlers, habitat destruction for the establishment of and by various dash not native to the island. अब not native to the island क्या है? They also introduce alien species ranging from cattle, pigs, goats and rats and go to plants. Alien species. आंसर हमने क्या देना? वन वर्ड ओनली. तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? स्पीशीज. Fed on baby tortoises and tortoises, which also fed on baby tortoises and tortoises. On the eggs, baby tortoises and young tortoises are damaged or destroy their habitat. 3 on the eggs, which also fed on baby tortoises and tortoises egg. ये होगी हमारी समरी. अब हम आएंगे अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे. अब यहाँ पे देख लें आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्या है. सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप. रीडिंग पैसेज 1 हैज 7 पैराग्राफ्स. A to G चूज द करेक्ट एंड हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ फॉर द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो. 1 to 8. ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था. अब हम लोग इसका आंसर दे देंगे. आइलैंड्स लाइफ. हमारा आंसर किधर होता है? हमेशा फर्स्ट 3 लाइन्स और लास्ट 3 लाइन्स में. Islands life agreed with them in the absence of significant predators. They grew to become the largest and longest living tortoises on the planet, weighing more than 400 kilograms, essentially exceeding 1.8 meters in length and living for more than a century. हमारा आंसर क्या है पैराग्राफ ए का? The importance of getting the time right. क्या टाइम राइट की बात भी नहीं हुई. यंग मिड सोल्ड ये भी नहीं. डेवलपमेंट ये भी नहीं. प्लानिंग अ बिगर आइडिया ये ऐसी भी कोई बात नहीं. टोटाइजेस पॉपुलेट द आइलैंड ये हो सकती है. इसका आंसर क्या है? बी. ये हमने किस तरह सीखा है? Island life agreed with them in the absence of significant predators. They grew to become the largest and longest living tortoises on the planet. Next paragraph. Before human arrival, the archipelago's tortoises numbered in the hundreds of thousands. From the 17th century onwards, pirates took a few on board for food, but the historian exploration was exorbitant. They also introduced alien species ranging from. यहाँ पे हम लोगों ने सारे का सारा क्या पढ़ा है? पायरेट्स के बारे में. फूड कैसे लेके जाते थे और उनके घरों को भी तबाह कर दिया था. तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा? कैरिंग आउट केयरफुली प्रिपेयर्ड ऑपरेशन, लुकिंग फॉर अ होम फॉर द आइलैंड्स tortoises, द स्टार्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. तो हमारा आंसर क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ टोटाइज. डेवलपमेंट्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ टोटाइज
populations. Next page is C पे. Today, only 11 of the original subspecies survive, and these several are highly endangered. In 1819, work began on a tortoise breeding center just outside the town of Purito, dedicated to protecting the island's tortoise population. The center's captive breeding program proved to be extremely successful, and it eventually had to deal with an overpopulation problem. Today, only 11 of the original subspecies survive, and these several are highly endangered. The center proved to be extremely successful, and it eventually had to deal with an overpopulation problem. Overpopulation problem. यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम के ऊपर. तो हमारा आंसर क्या है? द स्टार्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. नेक्स्ट आ जाए ज़रा. The problem was also a pressing one. Captive bred tortoise can't be into the wild until they are at least 5 years old and weigh at least 4.5 kilograms, at which point their size and weight and their hundreds shells are sufficient to protect them from predators. But if people wait too long after the point, the tortoise eventually become too large. यहाँ पे right time की बात हुई है. हम लोग इसका आंसर क्या कहते हैं? उसे getting the right time. Next पे आ जाए ज़रा. For years, repatriation efforts were carried out in small numbers, with the tortoises carried on the backs of men over weeks of long hikes along narrow trails. But in November 2010, the Environmental and Galapagos National Park liaison, the aim was to use a helicopter to move 300 of the breeding center's tortoises to various locations close to Sierra Nevada. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो बिगर मतलब हेलीकॉप्टर से लेके जा रहे हैं. तो कोई इसी तरह का आइडिया होगा ना. प्लानिंग a bigger idea. Next paragraph. This unprecedented effort was made possible by the owners of the 67-meter yacht White Cloud, who provided the Galapagos National Park with free use of their helicopters and its experienced pilot, as well as the logistical support of the yacht, its captain and crew. मतलब ये जो इन्होंने बिगर आइडिया किया, अब उसको क्या करना है, आगे उसको इस्तेमाल करने लगे हैं. तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? And during a period of 3 days, a group of volunteers from the breeding center worked around the clock to prepare the young for transport. Park wardens dropped off ahead of time in remote locations, cleared landing sites within the thick brush, cacti and lava rocks. केयरफुली प्रिपेयर्ड ऑपरेशन. वो जो हेलीकॉप्टर उन्होंने इस्तेमाल किया उसका उन्होंने ऑपरेशन कर दिया. नेक्स्ट. Upon their release, the juvenile tortoises quickly spread out over their ancestral territory, investigating their new surroundings and feeding on the vegetation. Eventually, one tiny tortoise came across a fully grown giant who had been lumbering. The two stood side by side, a powerful symbol of the regeneration of an ancient species. Regeneration of an ancient species. One tiny tortoise came across a fully grown giant. यहाँ से यहाँ आंसर हमारे क्या था? यंग मीट्स ओल्ड. यहाँ से टाइनी tortoise came across to fully giant grown. ये था आज का हमारा लेक्चर. आप मेरे लेक्चर को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करें. शुक्रिया.